my fellow citizens, on the eve of 65th Republic Day, I extend warm greetings to all of you in India and abroad. I convey my special greetings to members of our armed forces, paramilitary forces, and internal security forces. The Republic Day commands the respect of every Indian. On this day, 64 years ago, in a remarkable display of idealism and courage, we, the people of India, gave to ourselves a sovereign, democratic republic to secure all its citizens justice, liberty, and equality. We undertook to promote among all citizens fraternity, the dignity of the individual, and the unity of the nation. These ideals became the lodestar of the modern Indian state. Democracy became our most precious guide towards peace and regeneration from the swamp of poverty created by centuries of colonial rule. From within the spacious provisions of our Constitution, India has grown into a beautiful, vibrant, and sometimes noisy democracy. For us, the democracy is not a gift, but the fundamental right of every citizen. For those in power, democracy is a sacred trust. Those who violate this trust commit sacrilege against the nation. Some cynics may scoff at our commitment to democracy, but our democracy has never been betrayed by the people. Its fault lines, where they exist, are the handiwork of those who have made power a gateway to greed. We do feel angry, and rightly so, when we see democratic institutions being weakened by complacency and incompetence. If we hear sometimes an anthem of despair from the street, it is because people feel that a sacred trust is being violated. Fellow citizens, corruption is a cancer that erodes democracy and weakens the foundations of our state. If Indians are enraged, it is because they are witnessing corruption and waste of national resources. If governments do not remove these flaws, voters will remove governments. Equally dangerous is the rise of hypocrisy in public life. Elections do not give any person the license to flirt with illusions. Those who seek the trust of voters must promise only what is possible. Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. False promises lead to disillusionment, which gives birth to rage, and that rage has one legitimate target: those in power. This rage will abate only when governments deliver what they were elected to deliver: social and economic progress, not at a snail's pace, but with the speed of a racehorse. The aspirational young Indian will not forgive a betrayal of her future. Those in office must eliminate the trust deficit between them and the people. Those in politics should understand that every election comes with a warning sign: perform or perish. I am not a cynic because I know
that democracy has this marvelous ability to self-correct. It is the physician that heals itself, and 2014 must become a year of healing after the fractured and contentious politics of the last few years. My fellow citizens, the last decade witnessed the emergence of India as one of the fastest growing economies in the world. The slowdown of our economy in the last 2 years can be some cause for concern, but none for despair. The green shoots of revival are already visible. The agricultural growth in the first half of this year has touched 3.6%, and rural economy is buoyant. 2014 is a precipice moment in our history. We must rediscover that sense of national purpose and patriotism which lifts the nation above and across the abyss and back onto the road of prosperity. Give the young jobs, and they will raise the villages and cities to 21st century standards. Give them a chance, and you will marvel at the India they can create. This chance will not come if India does not get a stable government. This year, we will witness the 16th general election to our Lok Sabha. A fractured government hostage to whimsical opportunists is always an unhappy eventuality. In 2014, it could be catastrophic. Each one of us is a voter. Each one of us has a deep responsibility. We cannot let India down. It is time for introspection and action. India is not just a geography. It is also a history of ideas, philosophy, intellect, industrial genius, craft, innovation, and experience. The promise of India has sometimes been misled by misfortune, at other times by our own complacence and weakness. Destiny has given us another opportunity to recover what we have lost. We will have no one to blame but ourselves if we falter. Fellow citizens, a democratic nation is always involved in argument with itself. This is welcome, for we solve problems through discussions and consent, not force. But healthy differences of opinion must not lead to an unhealthy strife within our polity. Passions arising over whether we should have smaller states to extend equitable development to all parts of a state. A debate is legitimate, but it should conform to democratic norms. The politics of divide and rule has extracted a heavy price on our subcontinent. If we do not work together, nothing ever will work. India must find its own solutions to its problems. We must be open to all knowledge. To do otherwise would be to condemn our nation to the misery of a stagnant mire. But we should not indulge in the easy option of mindless imitation, for that can lead us to a garden of weeds. India has the intellectual prowess, the human resource, and financial capital to shape a glorious future. We possess
a dynamic civil society with an innovative mindset. Our people, whether in villages or cities, share a vibrant, unique consciousness and culture. Our finest assets are human. Fellow citizens, education has been an inseparable part of the Indian experience. I am not talking only of the ancient institutions of excellence like Takshashila or Nalanda, but of an age as recent as the 17th and 18th centuries. Today, our higher educational infrastructure consists of over 650 universities and 33,000 colleges. The quality of education has to be the focus of our attention now. We can be world leaders in education if only we discover the will and leadership to take us to that pinnacle. Education is no longer just the privilege of the elite, but a universal right. It is the seed of a nation's destiny. We must usher in an education revolution that becomes a launching pad for the national resurgence. I am being neither immodest nor beating a false drum when I claim that India can become an example to the world because the human mind flourishes best when it is, as the great sage Rabindranath Tagore said, free from fear, when it has the liberty to roam into spheres unknown in search of wisdom, and when the people have the fundamental right to propose as well as oppose. My fellow citizens, there will be a new government before I speak to you again on the eve of our Independence Day. Who wins the coming election is less important than the fact that whosoever wins must have an undiluted commitment to stability, honesty, and the development of India. Our problems will not disappear overnight. We live in a turbulent part of the world where factors of instability have grown in the recent past. Communal forces and terrorists will still seek to destabilize the harmony of our people and the integrity of our state. But they will never win. Our security and armed forces, backed by the steel of popular support, have proved that they can crush an enemy within with as much felicity as they guard our frontiers. Mavericks who question the integrity of our armed services are irresponsible and should find no place in public life. India's true strength lies in her republic, in the courage of her commitment, the sagacity of her constitution, and the patriotism of her people. 1950 saw the birth of our republic. I am sure that 2014 will be the year of resurgence. Thank you. Jai Hind.
मेरे प्यारे देशवासियों, 65वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत और विदेशों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बलों के सदस्यों को अपनी विशेष बधाई देता हूं। हर एक भारतीय गणतंत्र दिवस का सम्मान करता है। 64 वर्ष पूर्व इसी दिन हम भारत के लोगों ने आदर्श तथा साहस का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान करने के लिए स्वयं को एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य सौंपा था। हमने सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने का कार्य अपने हाथ में लिया था। ये आदर्श आधुनिक भारतीय राज्य के पथ प्रदर्शक बने। शांति की ओर तथा दशकों के औपनिवेशिक शासन की गरीबी से निकालकर पुनरुत्थान की दिशा में ले जाने के लिए लोकतंत्र हमारा सबसे मूल्यवान मार्गदर्शक बन गया। हमारे संविधान के व्यापक प्रावधानों से भारत एक सुंदर, जीवंत तथा कभी कभार शोरगुल युक्त लोकतंत्र के रूप में विकसित हो चुका है। हमारे लिए लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जो सत्ताधारी हैं, उनके लिए लोकतंत्र एक पवित्र भरोसा है। जो इस भरोसे को तोड़ते हैं, वो राष्ट्र का अनादर करते हैं। भले ही कुछ निराशावादियों द्वारा लोकतंत्र के लिए हमारी प्रतिबद्धता का माखौल उड़ाया जाता हो, परंतु जनता ने कभी भी हमारे लोकतंत्र से विश्वासघात नहीं किया है। यदि कहीं कोई खामियां नजर आती हैं, तो यह उनके कारनामे हैं जिन्होंने सत्ता को लालच की पूर्ति का मार्ग बना लिया है। जब हम देखते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को आत्मतुष्टि तथा अयोग्यता द्वारा कमजोर किया जा रहा है, तब हमें गुस्सा आता है और यह स्वाभाविक है। यदि हमें कभी सड़क से हताशा के स्वर सुनाई देते हैं, तो इसका कारण है कि पवित्र भरोसे को तोड़ा जा रहा है। प्यारे देशवासियों, भ्रष्टाचार ऐसा कैंसर है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है तथा हमारे राज्य की जड़ों को खोखला करता है। यदि भारत की जनता गुस्से में है, तो इसका कारण है कि उन्हें भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी दिखाई दे रही है। यदि सरकारें इन खामियों को दूर नहीं करती, तो मतदाता सरकारों को हटा देंगे। इसी तरह सार्वजनिक जीवन में पाखंड का बढ़ना भी खतरनाक है। चुनाव किसी व्यक्ति को भ्रांतिपूर्ण अवधारणाओं को आजमाने की अनुमति नहीं देते हैं। जो लोग मतदाताओं का भरोसा चाहते हैं, उन्हें केवल वही वायदा करना चाहिए जो संभव है। सरकार कोई परोपकारी निकाय नहीं है। लोक लुभावन अराजकता शासन का विकल्प नहीं हो सकती। झूठे वायदों की परिणति मोहभंग में होती है, जिससे क्रोध भड़कता है तथा इस क्रोध का एक ही स्वाभाविक निशाना होता है, सत्ताधारी वर्ग। यह क्रोध केवल तभी शांत होगा जब सरकारें वह परिणाम देंगी जिसके लिए उन्हें चुना गया था, अर्थात सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति, और कछुए की चाल से नहीं, बल्कि घुड़दौड़ के घोड़े की गति से। महत्वाकांक्षी भारतीय युवा उसके भविष्य से विश्वासघात को क्षमा नहीं करेंगे। जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें अपने और लोगों के बीच भरोसे में कमी को दूर करना होगा। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर एक चुनाव के साथ एक चेतावनी जुड़ी होती है। परिणाम दो अथवा बाहर हो जाओ। मैं निराशावादी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में खुद में सुधार करने की विलक्षण योग्यता है। यह ऐसा चिकित्सक है जो खुद के घावों को भर सकता है, और पिछले कुछ वर्षों की खंडित तथा विवादास्पद राजनीति के बाद 2014 को घावों के भरने का वर्ष होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशक में भारत विश्व की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले 2 वर्षों में आई मंदी कुछ चिंता की बात हो सकती है, परंतु निराशा की बिल्कुल नहीं। पुनरुत्थान की हरी कोपलें दिखाई देने लगी हैं।
इस वर्ष की पहली छमाही में कृषि विकास की दर बढ़कर 3.6% तक पहुंच चुकी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्साहजनक है। वर्ष 2014 हमारे इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण क्षण है। हमें राष्ट्रीय उद्देश्य तथा देशभक्ति के उस जज्बे को फिर से जगाने की जरूरत है जो देश को अवनति से ऊपर उठाकर उसे वापस समृद्धि के मार्ग पर ले जाए। युवाओं को रोजगार दें और गांवों और शहरों को 21वीं सदी के स्तर पर ले आएंगे। उन्हें एक मौका दें और आप उस भारत को देखकर दंग रह जाएंगे जिसका निर्माण करने में वे सक्षम हैं। यदि भारत को स्थिर सरकार नहीं मिलती तो यह मौका नहीं आ पाएगा। इस वर्ष हम अपनी लोकसभा के 16वें आम चुनावों को देखेंगे। ऐसी खंडित सरकार जो मनमौजी अवसरवादियों पर निर्भर हो सदैव एक अप्रिय घटना होती है। यदि 2014 में ऐसा हुआ तो यह अनर्थकारी हो सकता है। हम में से हर एक मतदाता है, हम में से हर एक पर भारी जिम्मेदारी है। हम भारत को निराश नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि हम आत्ममंथन करें और काम पर लगें। भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, यह विचारों का, दर्शन का, प्रज्ञा का, औद्योगिक प्रतिभा का, शिल्प का, नवान्वेषण का तथा अनुभव का भी इतिहास है। भारत के भाग्योदय को कभी आपदा ने धोखा दिया है तो कभी हमारी अपनी आत्मतुष्टि तथा कमजोरी ने। नियति ने हमें एक बार फिर से वह प्राप्त करने का अवसर दिया है जो हम गंवा चुके हैं। यदि हम इसमें चूकते हैं तो इसके लिए हम ही दोषी होंगे और कोई नहीं। प्यारे देशवासियों, एक लोकतांत्रिक देश सदैव खुद से तर्क वितर्क करता है। यह स्वागत योग्य है क्योंकि हम विचार विमर्श और सहमति से समस्याएं हल करते हैं, बल प्रयोग से नहीं। परंतु विचारों के ये स्वस्थ मतभेद हमारी शासन व्यवस्था के अंदर अस्वस्थ टकराव में नहीं बदलने चाहिए। इस बात पर आक्रोश है कि क्या हमें राज्य के सभी हिस्सों तक समतापूर्ण विकास पहुंचाने के लिए छोटे छोटे राज्य बनाने चाहिए। बहस वाजिब है, परंतु इसे लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। फूट डालो और राज करो की राजनीति हमारे उपमहाद्वीप से भारी कीमत वसूल चुकी है। यदि हम एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। भारत को अपनी समस्याओं के समाधान खुद ढूंढने होंगे। हमें हर तरह के ज्ञान का स्वागत करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह अपने देश को गहरे दलदल के बीच भटकने के लिए छोड़ने के समान होगा। लेकिन हमें अविवेकपूर्ण नकल का आसान विकल्प नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि यह हमें भटकाव में डाल सकता है। भारत के पास सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए बौद्धिक कौशल, मानव संसाधन तथा वित्तीय पूंजी है। हमारे पास नवान्वेषी मानसिकता संपन्न ऊर्जस्वी सिविल समाज है। हमारी जनता, चाहे वह गांवों में हो अथवा शहरों में, एक जीवंत अनूठी चेतना तथा संस्कृति से जुड़ी है। हमारी सबसे शानदार पूंजी है मनुष्य। प्यारे देशवासियों, शिक्षा भारतीय अनुभव का अविभाज्य हिस्सा रही है। मैं केवल तक्षशिला अथवा नालंदा जैसी प्राचीन उत्कृष्ट संस्थाओं के बारे में ही नहीं, वरन हाल ही की 17वीं और 18वीं सदी की बात कर रहा हूं। आज हमारे उच्च शिक्षा के ढांचे में 650 से अधिक विश्वविद्यालय तथा 33,000 से अधिक कॉलेज हैं। अब हमारा ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर होना चाहिए। हम शिक्षा में विश्व की अगुवाई कर सकते हैं, बस यदि हम उस उच्च शिखर तक हमें ले जाने वाले संकल्प तथा नेतृत्व को पहचान लें। शिक्षा अब केवल कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है, वरन सबका अधिकार है। यह देश की नियति का बीजारोपण है। हमें एक ऐसी शिक्षा क्रांति शुरू करनी होगी जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान की शुरुआत का केंद्र बन सके। मैं जब यह दावा करता हूं कि भारत विश्व के लिए एक मिसाल बन सकता है तो मैं ना तो अविनीत हो रहा हूं और ना ही झूठी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि महान ऋषि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, वास्तव में मानव मन तभी बेहतर ढंग से विकसित होता है जब वह भय रहित हो,
ज्ञान की खोज में अज्ञात क्षेत्रों में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो और जब लोगों के पास प्रस्ताव देने का और विरोध करने का मौलिक अधिकार हो। मेरे प्यारे देशवासियों, इससे पहले कि मैं हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको फिर से संबोधित करूं, नई सरकार बन चुकी होगी। आने वाले चुनाव को कौन जीतता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह बात कि चाहे जो जीते उसमें स्थायित्व, ईमानदारी तथा भारत के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमारी समस्याएं रातों रात समाप्त नहीं होंगी। हम विश्व के एक ऐसे उथल पुथल से प्रभावित हिस्से में रहते हैं जहां पिछले कुछ समय के दौरान अस्थिरता पैदा करने वाले कारकों में बढ़ोतरी हुई है। सांप्रदायिक शक्तियां तथा आतंकवादी अब भी हमारी जनता के सौहार्द तथा हमारे राज्य की अखंडता को अस्थिर करना चाहेंगे, परंतु वे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों ने मजबूत जन समर्थन की ताकत से यह साबित कर दिया है कि वह उसी कुशलता से आंतरिक दुश्मन को भी कुचल सकते हैं जिससे वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे बड़बोले लोग जो हमारी रक्षा सेवाओं की निष्ठा पर शक करते हैं गैर जिम्मेदार हैं तथा उनका सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत की असली ताकत उसके गणतंत्र में, उसकी प्रतिबद्धता के साहस में, उसके संविधान की दूरदर्शिता में तथा उसकी जनता की देशभक्ति में निहित है। 1950 में हमारे गणतंत्र का उदय हुआ था। मुझे विश्वास है कि 2014 पुनरुत्थान का वर्ष होगा। जय हिंद।